बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हमारा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट चेंज। वेदर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम डे टू डे, वीक टू वीक। इस तरह होता है कि आज कितना टेम्परेचर है, कल कितना है, परसों कितना है, ये आपका जो है एवरेज निकालें पर मंथ की, पर वीक की, कि कितना टेम्परेचर था हैदराबाद में इस वीक में, अगले में क्या होगा, इससे बैक क्या होगा। फिर ये जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं या जो वेदर जो बताते हैं, फिर अंदाज़न बताते हैं कि अब इस हफ्ते में जो कमिंग वाला वीक है इसमें ये टेम्परेचर हो, ये हो सकती हैं चीज़ें, फिर वो हो भी सकती हैं। तो ये था हमारा वेदर मीन्स टेम्परेचर। व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर? टेम्परेचर is a degree of hotness or coldness. It measured in Celsius or in Fahrenheit or Kelvin. It is above or below freezing. It is an important factor in determining the weather and other uh, weather variables. Where humidity है, the amount of water vapor present in atmosphere is called humidity. Absolute humidity, the amount of water vapor in a volume of air or atmosphere. Relative humidity, the amount of water vapors ends in the atmosphere compared to that when air is fully saturated. Precipitation in the term given to moisture that falls from the air to the ground. To the ground where atmosphere pressure present atmosphere is called, also known as the pressure on earth surface, shown on weather map, often called symptotic with lines called isobars. Wind movement of air mass from high pressure to low pressure is called wind. Cloud, a visible mass of condensed water vapor floating in atmosphere higher above the ground. It is the result of condensation or disposition of water. It develops in saturated air. उसके बाद सेकेंड हमारी टॉपिक है कि नेचुरल hazards or disasters. Disasters is an unpleasant event in which the needs of the affected community outweigh the available resources. Disaster affects human material. What are the causes of, what are reasons behind disaster? Factors which are given below. By nature, it is caused naturally. By humans, can have no human origin. It is combination of hazards, voluntarily and inability to reduce the potential negative consequences of risk. Disaster hazards plus इसका जो फार्मूला ये है, डिजास्टर इक्वल टू hazard plus vulnerability divided by capacity. Hazard threatening event or probability of occurrence of potentiality or potentially damaging phenomena within the given time period. Hazards may be two types, natural hazards and artificial hazards. Natural hazards कौन से हैं? Are naturally occurring physical phenomena caused by the rapid or slow onset events which can be geophysically earthquake, landslide, tsunami and the volcanic activities. ये हमारा हो गया geophysics. Climatologically extreme temperature, drought and wildfire. फिर मेट्रोलॉजिकली साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स। उसके अलावा बायोलॉजिकली डिजीज़ एपिडेमिक्स एंड ऑनसेट। इसके अलावा और जो हैं हमारे कुछ टेक्नोलॉजिकली एंड मेड हज़र्स और आर्टिफिशियल हज़र्स। दिस इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, फेमीन, डिस्प्लेस्ड populations, industrial accidents, transport accidents, they occur in or close to human attachments या settlements. Vulnerability, the diminished capacity of an individualist or group to anticipate, cope with, resist and recover from the impact of natural or man-made hazards. Capacity on the resources available to individuals, household, communities cope with the
threat or to resist the impact of a hazard. Resources can be physically, technologically, and material. Scale of a disaster depend upon lead, lead time, available, intensity of hazard, duration, special extent, density of population and assets, time of over occurrence, vulnerability of elements at risk. फिर आप जो एलिमेंट्स एट रिस्क, एलिमेंट्स कौन से हैं? पीपल, लाइव स्टॉक, वाइल्ड लाइफ, क्रॉप्स, ट्रीज एंड फॉरेस्ट, पर्सनल प्रॉपर्टी, हाउसिंग, यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल, टेलीफोन, electric poles, sewerage system, communication network, roads, railways, airports, immigration, irrigation and information. उसके बाद effects of disaster of all types can be primary, secondary, tertiary effects. प्राइमरी कौन कौन से हैं? जिसमें जो डेली लाइफ प्रोसेस हो, वाटर डैमेज ड्यूरिंग फ्लडिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक. सेकेंडरी जो इफेक्ट्स हैं occurs only because of a primary effects is caused them. प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी पैदा होते हैं. फायर इग्नाइटेड एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, डिस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड वाटर सर्विसेज एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, फ्लडिंग caused by landslide etc. फिर उसके अलावा टर्शरी इफेक्ट्स आर बीइंग लॉन्ग टाइम इफेक्ट दैट आर सेट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्राइमरी इवेंट, permanent changes in the position of river channel caused by flood, crop failure caused by volcanic corruption. उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे भी ऐसे भी आ सकता है कि कौन कौन से इसके रीज़न हैं. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर with all the humanitarian aspects of emergencies, in particular preparedness, response and recovery in order to lessen the impact of disaster. Disaster management cycle, it is an ongoing process to reduce the impact of disasters, react during and immediately following on disaster, take step to recover after a disaster has occurred. Four major elements of disaster management which are given below: mitigation, pre-disaster mitigations efforts, or preparedness, education, outreach, training, emergency management, planning. The response, immediate response affected, recovery, post-disaster recovery, mitigation and prevention. The climate of the reduced probability of disaster occurrence to reduce effects of avoidable disaster. Mitigation measure include, इसमें आ जाते हैं building codes, vulnerability analysis updates, building or regulation and safety codes, prevention health care. उसके बाद फिर ये आ जाते हैं its success depends on incorporations of appropriate measures, availability of information in hazards, effective plans available, preparedness. In the phase, the officials develop plans to save lives, minimize disaster damage, and enhance disaster response operation. Measures include preparedness plan, emergency exercise training, warning system, emergency communication system, the contact list, mutual aids agreement, public information and education. Response is aimed at meeting the basic needs of people. It restores confidence of effectives. It is the provision of basic but limited aid. It is an immediate assistance to maintain life, initial repair and priorities. उसके बाद ये ओवरऑल इसका स्केच है, वो आप देख लें कि किस तरह चीज़ें जो हैं ये फिगर में ओवरऑल हमें बताया है, जिसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं. ये देखें आप,
उसके बाद आ जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। इसका बैकग्राउंड इस पे CSS में ऐसे भी आता है कि मैनेजमेंट इनकी सही है सही नहीं है। जब फ्लड आती है, उसके बाद जब बारिशें होती हैं, तो पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर किस तरह होता है, तो उस पर हम पढ़ लेते हैं कि सही कहते हैं पाकिस्तान इज़ अ रिच कंट्री बट पुअरली मैनेज्ड। A devastating earthquake of 2005 in Balakot, the attention of government to establish disaster management system in compliance with NDMA was established at national level. PDMA were established afterward, जो 2005 में इंसिडेंट आया था, एक्सीडेंट आया, उसके बाद ही ये बना था। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी is supposed to serve on the focal point and coordinating body to facilitate implement of disaster management. इसके बाद NDA responsible for implement policies and plans for response in districts. Flaws in disaster management framework in Pakistan. It is only revolved around the flood disaster with a primary flaws on rescue and conflicts. Flow of systems. Flaws in disaster management framework in Pakistan. It is only revolved around the flood disasters with a primary focus on rescue and relief. Flaw for our system. After such disaster, government has secured confidence. इनको देखें, जो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखी हैं वो आप यहाँ से नोट कर लें। फिर रिकमेंडेशंस, उसके बाद अर्थक्वेक. An earthquake is an intense shaking of Earth's surface. The shaking is caused by movements in Earth's outermost layer. Although the Earth looks like a pretty solid place from the surface, it's actually extremely active justice below the surface. The Earth is made of 4 layers. Sudden release of energy in the form of seismic waves that create variations in the Earth crust is a result of abrupt movement of इलेक्ट्रॉनिक या टेक्टोनिक प्लेट्स, जो 15 प्लेट्स हैं हमारी, इसमें ओशंस भी हैं, कॉन्टिनेंटल भी हैं. Causes of earthquake, volcano eruption, heavy drizzling, nuclear experiments, moving plates. Effects, damage to structure, sea activities, ये सारी चीज़ें जो हैं डैमेज हो जाती हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है ड्यू टू अर्थक्वेक. लाइव्स ऑफ पीपल, इकोनॉमिकली लॉसेस होते हैं. जिस तरह 2005 में आया था, उसने देखो कोटिया का सब कुछ तबाह कर दिया था. लैंडस्लाइड, अवलेंचेस, इसके थ्रू भी ये भी इम्पेक्ट है इनके. सोशो इकोनॉमिक लॉसेस, मूवमेंट्स ऑफ अर्थक्वेक reduces loss, large lasting human, psychologically and socio-economic losses and deprivation, destroy homes, shatter families. Movements of earthquake. Volcano, ये भी कर लेते हैं. Volcano, when lava comes out from earth through mountain burst is called volcano eruption. How volcano creates an earth's mantle layer and full of magma, iron plus magnesium, where pressure increases, it comes out from the earth. इस तरह सकता है, ये इसकी फिगर है. Causes of volcano eruptions due to displacement of volcano plates, magma gets opportunity to come out from earth. Tsunami, ये समंदर में तूफान आता है. Series of gain waves caused by displacement large volume of water. Earthquake, volcanic eruption, landing sliding, underwater explosion. Speeds of the tsunami waves travel as fast as 100 kilometers per hour. Effects, wide destruction, powerful water, full of trees, buildings
and wash away entire beaches. Oscillation may continue for several days. That is why frequency outflow of water. Management steps हैं. इसके अलावा फ्लड्स हैं जो पाकिस्तान 2010 में आई थी, 2022 में आई थी, जिसकी बड़ी जो है लॉस हुआ था पाकिस्तान को. इसके अलावा बहुत इकोनॉमिकली बहुत जो लोग मर गए थे इसमें. इंटरनेशनल लेवल पे इसके इम्पेक्ट चले गए थे, जो सारा पाकिस्तान तकरीबन डूब गया था. So overflow of water from its natural onto normal dry lanes is called flood. Causes of flooding, meteorologically causes prolonged and intense rainfall, cyclones, typhoons, storms and tidal surges, climate change, global warming, deforestation. Hydrologically cause ice and snows melt, impermeable surface, saturated land, poor infiltration rates, land erosion. तो इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, प्राइमरी फ्लड हैं, सेकेंडरी फ्लड हैं, फ्लड प्रिवेंशन, डैम्स हो जहाँ पे कोई भी फ्लड का पानी एक्स्ट्रा हो वो जहाँ पे कहीं पे स्टोर हो जाए. मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स, स्ट्रक्चरल मेजर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रिवर इंजीनियरिंग, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, फॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, और अर्बन प्लानिंग. उसके बाद हमारी और टॉपिक है एनर्जी. एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू वर्क. इसको हम एनर्जी बोलेंगे. एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स. एग्जांपल लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी. उसके अलावा टाइप्स ऑफ एनर्जी दो हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी. फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 mv का है. पोटेंशियल P इक्वल टू mgh. ये मोशन हो, ये एनर्जी होगा ना किसी के अगेंस्ट में, जहाँ इसकी पोजीशन अगेंस्ट हो, अगेंस्ट एनीथिंग. सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं. दो तरह के हैं जो आजकल काम इस्तेमाल होते हैं. उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर्स. एटॉमिक स्ट्रक्चर की ये जो है फिगर है वो आप नोट कर लें. केमिकल बॉन्डिंग, फिर इसमें आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कूलिंग, metallic bond, electromagnetic radiations. It is a form of energy that is all around us and takes many forms such as light rays, radio waves, microwave. Property of electromagnetic wave, amplitude, wavelength. ये इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का. फिर मॉडर्न मटेरियल्स, केमिकल्स. Crimex. It is an inorganic, non-metallic solid made up of clay that has been shaped and then hardened by heating to high temperatures. Bricks, plates, glass, toilets. इनके एग्जाम्पल हैं क्रीमेक्स के. प्रॉपर्टीज़, इलास्टिक. ये हमारी फिजिकल साइंस चल रही है जिसमें दो क्वेश्चन आते हैं ईडीएस के. इलास्टिक, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़, एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स. फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस, रेस्क्यू एंड रिसाइकिल. उसके बाद जो हमारी नई टॉपिक है बायोलॉजिकल साइंस.